we wish to extend this celebration through literature and culture. Gyan Adab is a non-profit organization started with the aim to provide an interactive space for people of all ages to experience the joy of literature in its various manifestations. The center aims to celebrate different cultures through the medium of literature and will house books and conduct programs in all regional languages. The activities at the center will be free from political and religious agendas, class or caste differences, and activism of any kind. Please accept heartfelt gratitude from the managing committee members. We're very happy that all of us, you have taken the time to join us here. We will start off with the lighting of the diya. मैं इस सेंटर के ज़रिए मुझ जैसी हाउसवाइफ को लिटरेचर एंड इंटरनेट जैसे ख़जाने के बारे में बताना चाहती हूँ, उन तक उस ख़जाने को पहुँचाना चाहती हूँ। बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी हैं जो शादी से पहले बहुत कुछ पढ़ती थी, मगर शादी के बाद उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। दूर न जाते हुए मैं अपनी बहन की ही मिसाल दूंगी कि वो शादी से पहले काम ख़त्म होते ही 1 या 2 नॉवल 2-3 दिन में ख़त्म करती थी, मगर शादी के बाद मैंने उसके हाथों में एक भी बार किताब नहीं देखी। हालांकि उसको बहुत शौक़ था, किताब पढ़ने का बहुत शौक़ था। मैं इस सेंटर के ज़रिए उन औरतों को आगे लाऊंगी और वो जिस ज़बान में भी समझ सके उन तक वो किताबें पहुंचाऊंगी। इसलिए हमने ज्ञान अदब के ज़रिए मोहल्ला लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट शुरू करने का फ़ैसला किया है। मेरा एक और मकसद इस सेंटर के ज़रिए है कि मैं यंग ऑथर को मौका दूं, उनको इंट्रोड्यूस कराऊं। ज्ञान अदब एक ऐसी लाइब्रेरी नहीं बल्कि मल्टी लैंग्वेज सेंटर है जो लिटरेचर मूवमेंट बनकर रहेगा और जिससे हर कोई फ़ायदा हासिल करेगा। ये मेरा मकसद है। हसरतें हद से जब गुज़र जाएं, हसरतें हद से जब गुज़र जाएं, तो मेरे दिल बता किधर जाएं, तो मेरे दिल बता किधर जाएं। Okay, thank you. With Mr. and Mrs. Merchant as founder members. They are supported by an advisory committee. Each one of them is from the creative world and bring along vast experience in this field. So I'm very honored to introduce them to you in their endorsements in their own very unique way. Let me start off first. Mrs. Mumtaz Peerboy.
अभी आपने ज्ञान अदब के बारे में सुना, और ये ज्ञान अदब 3 जबानों में है, मराठी, अंग्रेजी और उर्दू। जी हाँ, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, दोस्ती, अमन और शांति, यही हमारा जुनून, हमारा पैशन है। तमाम जबानों से परे हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति, हमारा अदब, हमारा लिटरेचर, हमारी सकाफत, हमारा कल्चर एक ही है। इस गंगा जमनी तहजीब को, इस कंपोजिट कल्चर को कायम रखने और इसको आगे तक ले जाने की कोशिश का नाम है ज्ञान अदब। हम सब जितने भी लोग ज्ञान अदब से जुड़े हैं, इन सब का यही एक मकसद है। शुक्रिया। This evening's program that you're going to witness is a fine example of the way that I think I would like to spend my evenings, with some art, some culture, books close at hand that I can reach out and read, a little bit of theatre, some poetry, and wonderful, wonderful discussions after a film, after reading a book, after looking at an art exhibition. Don't you always want to turn around and talk about it? But you've read a book that you've really found meaningful, you want to tell someone about it. And if you go to an art exhibition that is better than any you have ever seen, you want a companion to turn to and say, look at that. Now I think Gyan Adab is going to fulfill some of these expectations of mine. Thank you. एक प्रश्न तुमच्या मनात नक्कीच आला असेल की ज्ञान अदबची माझ्या आयुष्यातली नक्की भूमिका काय? एका छोट्याशा गोष्टीत मी तुम्हाला सांगते. एक माणूस होता, त्यानं ठरवलं की एका सुंदर टेकडीवर आपण जावं. गावापासून काही अंतरावर टेकडी होती. तो गावातनं निघाला टेकडीवर जायला. चालता चालता हळूहळू संध्याकाळ झाली, अंधारून आलं. त्यानं विचार केला, आता मला पुढचा रस्ता काही दिसणार नाही. त्याचं खाणं झालं, तो बसला होता निवांत. तेवढ्यात त्याला दुरून उजेडाचा एक ठिपका त्याच्या बाजूने येताना दिसला. त्याने न्याहाळून पाहिलं. तोपर्यंत तो प्रकाश त्याच्या जवळजवळ येत होता. त्याने पाहिला एक तरुण कंदील घेऊन त्याच्या जवळ येऊन उभा होता. तो म्हणाला, बाबा का बसलाय तिथे? तो म्हणाला, अरे लेकरा, मला या टेकडीच्या माथ्यावर जायचंय, पण बघितलंस ना, आता अंधारून आलंय, थोड्या वेळानं गडद रात्र होईल, रस्ता काही मला दिसणार नाही. तेव्हा तू पण माझ्या बरोबर बस. तू कुठे चाललाय? तो म्हणाला, मीही टेकडीच्या वरतीच चाललेलो आहे. आपण दोघं सकाळी उजाडल्यावर जाऊया. तरुण म्हणाला, बाबा, माझ्या हातात हा कंदील आहे. अरे एवढ्याच्या कंदीलात आपल्याला दूरची वाट कुठली दिसणार आहे? तरुण हसला आणि म्हणाला, बाबा, ह्या कंदिलाच्या प्रकाशात पुढची 5 पावलं जाण्याची वाट तर आपल्याला नक्की दिसेल, आणि ती 5 पावलं आपण चालून गेलो की पुढची 5 पावलं चालायला हाच कंदील आपल्याला वाट दाखवेल. मित्रमैत्रिणींनो, ज्ञान अदबची तुमच्या आयुष्यातली भूमिका हीच आहे. एका सुंदर रम्य टेकडी चढायला तुम्ही सुरुवात कराल तेव्हा 5 पावलं तुमची सोबत करून तुम्हाला तुमची वाट दाखवायला ज्ञान अदब सतत तुमच्या बरोबर असेल. आपण सगळेच त्याचा एक हिस्सा होऊया. धन्यवाद. But there is a vision I have had that is reflected in what Gyan Adab is all about. This vision is a dream where I can get a community of people together. This community will share its pleasures and of art, literature, culture, and remove all boundaries there. What has inspired me about the whole Gyan Adab experience is not just books. It's not just the artistic experience. It's something more. Is that subterranean river that connects cultures, and most importantly, that brings alive the creative experience which expresses itself in books, expresses itself in art, in music, which expresses itself
in that celebration of the culture of human beings. And it's that which has formed the foundation of all our civilizations, and whatever we are today, that has always been the bedrock.